आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। You are listening the national level audio bulletin of the Samachar Agency of India from Preeti on 6th October 2020. The headlines are Prime Minister Narendra Modi called the responsible use of the artificial intelligence and the protecting the world against the weaponization of AI by the non-state actors. Education Ministry issued the guideline for reopening of schools in country. India's COVID-19 testing capacity touched 15 lakh sample per day. Center to urgently release 20,000 crore rupees for the compensation to state for the revenue losses. Foreign Minister of all the Quad countries India, US, Japan and Australia to meet in Tokyo today. Delhi Capitals beats Royal Challengers Bangalore by the 59 runs in Dubai. Prime Minister Narendra Modi has stressed for the responsible use of the artificial intelligence AI and protecting the world against the weaponization of AI by non-state actors. Mr. Modi said for the while the inaugurating the summit the RAISE 2020 Responsible AI for the Social Empowerment 2020 through video conferencing. Prime Minister said India has recently adopted the National Education Policy 2020 which focus for the technology past the learning skills as the major part of education. Prime Minister said the National Education Technology Forum is being formed. This will be create e-education unit to boost the digital infrastructure, digital content and capacity. He said the government has launched the Atal Innovation Mission to promote a culture of innovation, entrepreneurship and give to peace and the emerging technologies of people's benefit. Mr. Modi said there is being the role for all the sectors like agriculture, create next generation urban infrastructure and it can be used for the making disaster management system stronger. Ministry of the Electronic Information Technology and Niti Aayog are the organized the mega virtual summit on the artificial intelligence which will be the continue to the 9th of October. The center will be urgently disburse nearly the 20,000 crore rupees amount for the state for the amount collect for the compensation of this year. Finance Minister Nirmala Sitharaman made for the announcement after the 42 GST Council meet yesterday. In the major announcement giving the huge benefit for the defense force personally, government has scrapped the requirement of the minimum qualifying the service to enhance the family pension with the effective of the 1st October 2019. As per the extension provision, there is the requirement for the continuous qualifying the service of the 7 years for the grand ordinary family and pension to enhance rate the next of the keen of the defense force the personnel. Indian Air Force of deployed strongly in the Ladakh region to deal with any contingency. Addressing media in New Delhi yesterday, IAF Chief Area Chief Marshal RKS Bhadoria made the development in all the rebel area in Ladakh. Ministry in the Labour Employment Santosh Kumar Gangwar has said that is the new labor the codes and promote the harmoniously for the industrialization and the higher productivity and the more employment generation. Addressing for the webinar the 86th annual general meeting of the AIOE in the body of FICC yesterday, Mr. Gangwar said the labor code will be the establishment transparent and the answerable and the sample mechanism along with the one registration, one license and the less return feeling for the all the codes.
Education Minister has issued the standard operating procedure for the reopening the school in the country. The guideline for the gradually reopening for the school after the 15th of October are the broadly divided into two parts, which including the health and the safety aspects. In accordance with the Health Ministry guideline to follow the necessary safety and precaution of the ensure physical distance and the wearing the mask. The second part of the guideline deal for the academic aspects on the method of delivery education admits and the pandemic. Guideline emphasize for the smooth transition for the student from the home-based schooling during the lockdown to the form the schooling by the school authorities. It calls for the making the comprehensive alternative calendar for the activities for the whole year with the focus for the learning outcomes. The teacher have been based as the polish their skill for the integration of the IT technology for this proper uses of the class modules. Use of the divergent teaching resources including the peer teaching and the learning. Uses the workbook for the worksheet and use for the technology based resources in a class have been advocated in the order of ensures the compliance with the physical distancing and other safety norms. School has also been inaugurated to make their own SOPs based on their guideline issued by the state, and the UTAs keeps the view the safety and the physical and social distancing norm. You were listening the national level audio bulletin of the Samachar Agency of India from Preeti Bhonslse on 6th October 2020. If you like this bulletin, then you must be like it, subscribe and share it. Till then, goodbye. आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे।
इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।